Good morning, everyone. So we'll be starting off with reading comprehension. आज हमें reading comprehension ऊपर टिके देखिबा. एटा तो हमें reading comprehension जो approach करूचे समस्ते किछि ना किछि गोटे strategy नेकी चलनते कि reading comprehension को केमिति हमें approach करिबा. reading comprehension रे shortcut कोन अछि सब बहुत प्रकार थांती. आज जोटा हमें करिबा सेटा it is not about reading comprehension केमिति approach करिबो. it is about how to get the answers correct. माने तमे जो भी approach नियो तमरे ही approach नियो जो भी approach नियो किछिटा अंडरस्टैंडिंग हम मन रे रहया अछि कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली कोन केमिति अप्रोच करा हबो आ केमिति हमें आंसर ता ठीक कि भूल डिटरमाइन करी कि नेक्स्ट आंसर को हमें बढ़ी पाइबा. सो आजी मु बेसिकली तम संगे जोड़िए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शेयर करी. छोट सेशन रखिबा से जोड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें शेयर माने सॉल्व करिबा. अप्रोच तो देखिबा कोन डिफिकल्टीज होची देखिबा कहार माने को क्वेश्चन पैटर्न आछ देखिबा को प्रकार क्वेश्चन को केमिति हमें सॉल्व करि परिबा सेडा देखिबा. तो आज खाली मन रखो एटा तम स्ट्रेटजी ऊपर किछि एक्स्ट्रा न हो कि तम स्ट्रेटजी तो किछि बेसी भिन्न न हो. ऑलरेडी तम गोटे स्ट्रेटजी तम से स्ट्रेटजी को फॉलो करिवो. ए जो स्ट्रेटजी ये गोटे डिफरेंट अप्रोच जो तरह की एक्यूरेसी ता बढ़ी जीवो. तमे तम स्ट्रेटजी संगे एटा भी यूज करि परिबो. जस्ट पर्पस होची कि एक्यूरेसी ता बढ़ियो माने आमे जानिबा कि एक क्वेश्चन आंसर ता ठीक विदाउट डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेगा आ हमको सेकंड थरो से क्वेश्चन को अप्रोच करिया को पड़िबो. सो हम स्टार्ट करिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल एडा वो जी दिस इज जोटा मु कहली ऑब्जेक्टिव होची एडा को खाली स्मार्ट स्ट्रेटजी एथि पय को होची कारण एक्यूरेसी ता बढ़ुची बोली. बट ए स्ट्रेटजी ता सिंपली तम एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी संगे भी कंपैटिबल अछि. सो किछि बेसी फेयर करिया नहीं. सो फर्स्ट देखिया ये भीतर यदि किछि तमरे होउची ताहले देखि दियो. I read the passage but still get answers wrong. माने मु पैसेज ता पढे तथापि भी मो आंसर ठीक आसेनी. मते जोटा आंसर लगे सेटा मोर आसेनी. मु किंतु जोटा आंसर मारे सेटा भूल सबले आसे. प्रैक्टिस कलाळु प्राय आसी टेक्स टू मच टाइम मु मतलब पढे रे बहुत टाइम लगे. मु बहुत अधिक टाइम लेके पढे राइट. ऑप्शंस कंफ्यूज मी. सेम टाइप ऑफ ऑप्शन जोड़े हे गेले मु कंफ्यूज हे जाय. मते लागे ए ऑप्शन टा भी हो से ऑप्शन टा भी को ऑप्शन टा मोटे कंफ्यूज है. यदि एगुडा होउची ता माने किछि ना किछि गड़बड़ रहउची. को गोटे जगह रे हमरो अंडरस्टैंडिंग रे गड़बड़ रहउची कि हमरो अप्रोच रे गड़बड़ रहउची किछ तो गड़बड़ रहउची. तो रियलिटी टा कोन एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नो सो जी आरसी होउची गोटे ओपन बुक. जेने हम को ओपन बुक एग्जाम आरसी टा होउची ओपन बुक. तमे कंसीडर करके आरसी टा होउची ओपन बुक हैला. आरसी इज ओपन बुक एग्जाम. आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन. ऑलरेडी आंसर्स गुडा दिया जाईची. आउ आमे जदी एक्स्ट्रा बाहर नॉलेज यूज न करिबा ताहले आंसर्स गुडा को फाइंड करिया बहुत सहज होबो. बाहर नॉलेज माने कोन धर गोटे टॉपिक दोची दिया आइची जोटा जहां ऊपर तुम ऑलरेडी जानिचो. धर पॉलिटिक्स ऊपर किछ टॉपिक दिया जहां जे तुमरो इंटरेस्ट भी अछि आ तुम से टॉपिक भीतर बहुत भलो जानिचो. तुम पूरा ये जानिचो कि कोन हेतला केबे हेतला कोन हेतला. किंतु जो पैराग्राफ टा दिया है जो पैसेज टा जो दिया है से गोटे कोन पर्टिकुलर इवेंट से पूरा टॉपिक न करी गोटे पर्टिकुलर इवेंट भीतर कथा आइची. सेही पर्टिकुलर इवेंट ऊपर ही से क्वेश्चन पछाची कि जेहेतु तमे पूरा इवेंट विषय जानिचो तम मन रे आस्तबो कि एटा भी ठीक हेति परबो सेटा भी ठीक हे परबो कारण मु तो एटा जानिची किंतु एठी तो से भले किछि मेंशन हेनी तले कोटा ठीक कोटा भूल एटा भी हे पारे. से पे कहूची आंसर ऑलरेडी दिया हेची जहा लिखा हेची जो पैसेज है से पैसेज भीतर तुम आंसर ऑलरेडी अछि. तमे जस्ट
बाहर कौन सी इनफॉरमेशन कि बाहर कौन सी नॉलेज जोटा लिखा है ताडू बाहर जदी कौन सी नॉलेज ऊपर न फोकस करिवो ताहले तमर आंसर खोजिया बेसी सहज हो। आउ थरे कहूची रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टा होची ओपन बुक एग्जाम भलिया आंसर दिया ही था खाली खोजिबार अछि आंसर टा कोठी अछि जानि कि खाली आंसर दबार अछि। एई माइंडसेट रे हमें आज रो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टा कंटिन्यू करबा। अच्छा किछि कीवर्ड्स ऊपर में फोकस दबा जतले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूचे किछि कीवर्ड्स ऊपर फोकस देले हमें सहजे आंसर ओडा को खोजि परिया। जेमिति नेम्स किए को लोक केबे कला को लोक केबे कला माने जदि कौन सी प्रोडक्ट अछि कौन जिंस अछि कौन सी पॉलिसी ना अछि कौन सी माने कौन सी दिन रो कौन सी पर्टिकुलर सेलिब्रेशन ना अछि से सबु ना गुडा पर टिके ध्यान दवा। केबे हेतला केते किए केबे केते ए तीनटा ऊपर हमें ध्यान दवा। नेम्स डेट्स एंड नंबर्स हैला तापरे ए भलिया वर्ड ऊपर हमें टिके बेसी फोकस करिया काहे कि कारण एगुला टोन चेंज करंती कॉन्टेक्स्ट चेंज करंती बट हेले आगुर पॉजिटिव थिले नेगेटिव नेगेटिव थिले पॉजिटिव हाउएवर हेले कंट्रास्ट देयरफॉर हेले कंक्लूजन। तो हमें एई सब वर्ड गुडा पर जदि फोकस करि परिबा ताहले हम जानि परिबा कोउटा कोउठी अछि किए करिछि केबे करिछि केते करिछि आउ जदि कौन से कंट्रास्ट अछि कंट्रास्ट माने टोन चेंज होछि कॉन्टेक्स्ट चेंज होछि कि नहीं कार रिजल्ट ऊपर हम डिस्कस करछि कि नहीं से सब गुडा जदि मन रहबा इट इज इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो एबे गोटे छोटो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रु स्टार्ट करबा। एटा एक्चुअली जोड़े पेज रे अछि कारण रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी बड़ थाए तो जोड़े पेज रे अछि। तो आमे प्रथमे एटा को पढिबा। तो बहुत लोक को बहुत प्रकार स्ट्रेटजी बहुत पिला को बहुत प्रकार स्ट्रेटजी थाए तो पिला मन कहबे नहीं सर हमें तो हमर स्ट्रेटजी होची प्रथमे में क्वेश्चन पढू प्रथमे में क्वेश्चन पढू तापर क्वेश्चन हिसाब रे हमरे आंसर खोजू। आई एग्री एटा बहुत भलो स्ट्रेटजी एक्चुअली किंतु मु आजि कहूची कि आमे ए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टा पढुचे आजि खाली एक्यूरेसी बढ़ाया पई माने केमिति पढी कि आमे आंसर टा ठीक दबा तारि पर फोकस करिबा। तमे जे कोन स्ट्रेटजी करा आगो क्वेश्चन पढी कि तापर रीडिंग माने पैसेज पढो कि पैसेज पढी कि तापर क्वेश्चन पढो इट इज अप टू यू हैला। तो मोर होची खाली क्वेश्चन टा केमिति एक्यूरेटली सॉल्व करे तापर खाली आज फोकस करबा। तो मु आज जो स्ट्रेटजी करूची सेटा होची आगो मु पैसेज पढी देबी तापर क्वेश्चन टा करिवि। तो हाँ एमिति ही हेई पारे मु आगो पछ जाई कि एक्सप्लेन करबा आगो पछ जिबी ता माने नुह जिए ए भलिया प्रोसेस करे कि ए स्ट्रेटजी यूज करके प्रथमे पैसेज पढी कि तापर मु क्वेश्चन सॉल्व करची से तार बेसी टाइम लागियो मु खाली एक्सप्लेन करे पे आगो पछ जाई पारे किंता माने नुह कि जे स्ट्रेटजी यूज करची से भी बारंबार जाउथो हैला। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। The strength of a nation is often measured not only by its economic output but by the stability, resilience and well-being of its people. Economic growth stems from combination of natural resources. Economic growth stems from a combination of natural resources, infrastructure, governance and most critically investment in human capital. Countries that prioritize education and healthcare lay the foundation for long term prosperity. गोटे long term prosperity ऊपर गोटे कोन कथा होची। सो मते एठी इंपोर्टेंट कोन लागिला एठी टोन चेंज हे पारे इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर किछ गोटे कथा होची आ गोटे मोस्ट क्रिटिकल गोटे माने सबुठ बेसी इंपोर्टेंट कोन हो मोस्ट क्रिटिकली ता माने एठी जो एटा बेसी इंपोर्टेंस रहइबो मोस्ट क्रिटिकली एटा रहइबो। कंट्रीज दैट प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ले द फाउंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ये गोटे नाउन जोटा कि हमें फोकस कर परिया। अगेन
A glaring truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth. Wealth alone cannot secure sustainable growth. Acha. Natural resource rich nations may enjoy short-term revenue surges, but without strong institutions and skilled, healthy workforce, such progress risks becoming fragile. Education equips individual with the skills needed for innovation, adaptability, and competitiveness. Healthcare, in turn, ensures that citizens can contribute productivity over long term, reducing abstinence. Maybe abstinence and lowering the of disease economic burden of disease. The healthcare in turn ensures healthcare ensures that citizens can contribute productively over the long term, reducing absenteeism जे absent रहुची हैला and lowering economic burden of disease. जदि disease जो कौन सी economic burden पड़ुची ताको टिके घटे दे परियो कौन healthcare एडा. For example, some resource dependent nations have taken steps to diversify their economic by dash revenue into schools, training centers, hospitals, and public health programs. Angola in recent years has made efforts to invest in education and healthcare to reduce its dependency on oil exports. By enhancing human capital, it aims to strengthen productivity and attract investment in sectors beyond its primary industries. While challenges remain, such measures show the potential of transforming short-term gains into lasting national strength. So, एठी कोनटा importance रहबो example हिसाब some for example एगोडा होची example हैला तापरे Angola has made efforts to invest in education. It is important. Angola कौन करिची healthcare reducing है. By enhancing human capital, it aims to strengthen productivity. Angola कौन करिची enhancing human capital, strengthen productivity. एटा important लगला होता है. Attract investment and short term हे परियो. Okay. अच्छा एटा. While challenges remain, while मैंने तथापि, so it is very important. While challenges remain. Now, however, however, the global economic environment remains uncertain. Trade disruptions, fluctuating commodity prices, and geopolitical tensions can stall. देखो एठी dark है कि अच्छी, तमने यहाँ पर उड़े question अच्छी. Geopolitical tensions can stall development plans. Okay, stall माने generally कौन होगा माने stop कर दो किसी halt कर दो तो एठी यार ऊपर उड़े question अच्छी. Maybe सिडनी में एंटरनी में हित ही परे to slow down. Maybe it a slow down हिसाब से उड़े कौन होगी slow down कि stop एवढ्या ठीक है जी किसी और रहला. Development plans even in countries with ambitious social investment strategies. A grim example, maybe you do not know. A grim example is when external stocks force government, force governments to cut back on the essential public spending. मैंने government को force करा जाऊँगी. ताहले ये वाट टिके negative थाई पारे. कारण एठी हमें negative देखुचे. Force governments to cut back on essential public spending, undermining years of progress in education and health sector. Undermining it negative पुणे असेला टिडी. आगुरु सब positive चलता. एठी however परे
टोन चेंज है कि नेगेटिव आसीगलानी undermining years of progress in education and health sectors. The capacity to withstand such shock depends heavily on diversified economics and robust fiscal planning. अच्छा, withstand माने सही जा पाए, तो withstand shock depends on economics fiscal planning. ହେଲା, maybe these are important. मते एटा important लागु जे because it feels like ए थ्रू मु context गुडा बुझी पाछु. National strength therefore माने एथरा concluding आछो. National strength therefore is not built overnight. It requires consistent policies, transparent governance and a vision to balance immediate economic needs with long term development goals. याकू ठीक करी केमते पढ़िबो national strength requires consistent policies, transparent governance and the vision to balance immediate economic needs with long term development goals. एटा होची the correct sentence. माने एटा को जो थाए ए जोड़ थाए ये जस्ट ठीक है स्लाइट डिस्ट्रैक्शन के ड्रामेटाइजेशन पे यूज करा हुए. सो आमी को जो नेशनल स्ट्रेंथ रिक्वायर्स कौन नेशनल स्ट्रेंथ माने नेशनल स्ट्रेंथ को कौन दरकार. ओके, by fostering a population that is educated, fostering माने ग्रो करिया, educated, healthy and capable of innovation, nations can ensure resilience in the face of global uncertainty. In conclusion, माने conclusion एटा रहिबा, एटा therefore माने concluding आसला, माने एथुर आमे कोन conclude करि परिबा. तार ए पूरा पैसेज रो conclusion दउची, economic growth flourishes माने भलो हुए when it rests on solid social foundation, investments in human capital through education and healthcare. In conclusion, economic growth flourishes through education and healthcare. It's most important. Are not only moral imperatives but strategic economic decision. It's a strategic economic decision. Whether resource rich or resource poor nations that prioritize these areas strengthen their position in the world and secure prosperity for future generation. है आगे जनरेशन को से सिक्योर माने तांका prosperity को निज आगे जनरेशन को से सिक्योर करूछन्ते कि नहीं. सो एटा जो पढिलो तमे देखो, you may not understand the entire things, पूराटा बुझि न पातो, कि at least एतिक जानिछो ये किछि डेवलपमेंट विषय कथा होछि. फर्स्ट पार्ट रे पूरा डेवलपमेंट विषय कथा होतला. हाउएवर हला पर से कोच कोन कोन प्रॉब्लम होछि त माने आमे प्रॉब्लम विषय रे एठी कोठी डिस्कस करिछे. या पूर्वरु सबु भलो थिला, केमिति भलो थिला, कोन भलो थिला, ऑल पॉजिटिव साइड्स रे हम डिस्कस करछे. ए पार्ट रे टिके नेगेटिव जाईछि. तापरे से एज अ सॉल्यूशन टाइप रे नेशनल स्ट्रेंथ सा केमिति हो माने केमिति हम नेशनल स्ट्रेंथ कोन नेशनल स्ट्रेंथ अगर जदि हमें डेवलप करे चाहू छे, बिल्ड अप करे चाहू छे, ताले कोन दरकार से एठी सब कहि छी. आ फाइनली से कंक्लूड कर छी इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लरिशेस माने इकोनॉमिक ग्रोथ केमिति होबो जदि सेथि एजुकेशन और हेल्थ केयर को हमें माने बढ़ू छे, जदि हमें एजुकेशन हेल्थ केयर इंप्रूव करू छे ताले होबो. आ resource rich or resource poor nations that prioritize these areas strengthen their position. जो नेशन भी ए जो रिसोर्स रिच रिसोर्स पुअर टाकू तमे बेसी कंसीडर करनी. अच्छा, खाली भाबो एठी बड़ा नेशंस दैट प्रायोरिटाइज दीज एरियाज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन. एबे बुझियला जो भी नेशन हेल्थ केयर और एजुकेशन ऊपर बेसी फोकस करिवो देन दे आर स्ट्रेंथनिंग देयर पोजीशन. एटा होस्तारा फाइनल कंक्लूजन, राइट. एथरो आमे क्वेश्चन अडक जिवा. According to the passage, what is the key limitation of relying
solely on natural resource wealth. एटी पांचटा ऑप्शन अछि टिके पढ़ ओके पांचटा ऑप्शन अछि टिके पढ़ तापरे आमे गोटे गोटे पर गोटे सॉल्व करिवा फर्स्ट पांचटा जक ऑप्शन पढ़ अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ की लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग solely on natural resource wealth. चलो ऑप्शन ऑप्शन पढ़िया पढ़ जे भलो बट स्टिल देखिया कोठी हमर मु कोन कहली ऑलरेडी द आंसर इज गिवन तो आमे एडी देखिया कोठी हां कोड लिखा है देखो a glaring truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth खाली wealth रो हो natural resource rich nations may enjoy short term revenue surges but contrast without strong institutions and a skilled healthy workforce such progress risks becoming fragile. अच्छा जदि न बुझी पारछ लेट मी शो यू अच्छा ए देखो एमती पढ़ो natural resource rich nations enjoy short term revenue but such progress risks becoming fragile. इधर कौन मुझे short term revenue may enjoy short term revenue तमें may भी पारे गोटे short term by revenue तांको आसीबो हेला but without but such progress risk becoming fragile. सेगा but पर एटा पढ़ो such progress risk becoming fragile may be तांकरो माने revenue आसी पारे किंतु एटा बेसी समय जाए रहिबनी धीरे धीरे सेटा भांगी जियो दैट इज इट विल फेड अवे. देखिया हम ऑप्शंस कोन कोन छी अच्छा एटे ए जिंसडा को एठी भी माने किछि पिल्ला एठू भी आनी परबे कारण एठी एटा रिसेंटली पढ़ले ना रिसोर्स रिच रिसोर्स पुअर तो सेमाने अभी रिसोर्स रिसोर्स पुअर और रिसोर्स रिच नेशन सेम थाई पारे तो सेमाने एठी एटा पढ़ी की भी कंफ्यूज होई पारे तो मन रखियो कोठी कोन होतला. Now देखो it encourages overproduction and causes consistent price. अच्छा एटी कौन से प्रकार कंट्रास्ट अछि माने बतौची कि एटा हेछि किंतु आ गोटे कोन बनी बट भले कौन से कंट्रास्ट अछि देखो it encourages overproduction and ता माने कंटिन्यू करछि तो लेटा होबनी ताको ऐड करछि it results in the neglect of rural production who rely on agriculture. अच्छा it results ए जो रिजल्ट अछि एडा फाइनली कोन से कोन कहूची कि सेठी कहतला मे भी ग्रोथ रा कि शॉर्ट टर्म में हेते कि से ग्रोथ रा बेसी दिन जाय सस्टेन करिवनी एठी रिजल्ट पर कथा कहूची फाइनली कोन हबो तो एटा भी गोटे वर्ड it provides short term gains but fails to build institutional and human capital strength. हेई पारे मे भी से गोटे शॉर्ट टर्म गेन हेई पारे किंतु तारे विशेष किछि बेनिफिट शॉर्ट टर्म अल्प दिन पई रही परियो मे भी एटा हेई पारियो. It reduces the need for governance reforms and hinders diplomatic relation. अच्छा देखो ये नेगेटिव टोन आसेनी it reduces the need of governance गवर्नेंस दरकार पड़ियो सेटा रिड्यूस कर दोची बस एतिकी पड़िथियो जदी देखो एतरे कोन जगह गवर्नेंस विषय कथा हैनी एतिकी रे कोन से गवर्नेंस विषय कथा हैनी एजुकेशन ऊपर तापरे एजुकेशन विषय तापरे कथा हैची तापर एडेप्टेबिलिटी हेल्थ केयर ऊपर तापर कथा हैची बट एठी गवर्नेंस ऊपर किछि कथा हैनी सो दिस कैन नॉट बी द आंसर प्लस सेटा एते नेगेटिव नथला से पार्ट रे सब जिंस पॉजिटिव थला तो एटी
एठी नेगेटिव अछि तो एटा ही परिबनि इट एंश्योर्स दैट कंट्रीज फोकस एक्सेसिवली ऑन एजुकेशन बहुत अधिका एजुकेशन एंड इग्नोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ए देखो बहुत अधिका एजुकेशन ऊपर फोकस करिवे आउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इग्नोर कर देबे नेगेटिव गोटे आसला एंड कहिछि एंड एटा भी करिवे आ सेटा भी करिवे किंतु हमर कोन थला गोटे जिंस होची किंतु हेले सेटा बेसी दिन सस्टेन करबनी तो एटा भी ठीक हिसाब रे जाउनी जदी तुम पूराटा भी न बुझी परछो एंड अछि इग्नोर करूची पॉजिटिव टोन रे चलीची आउ हमर कंट्रास्ट दरकार एठी ना पॉजिटिव टोन अछि ना कंट्रास्ट अछि तो ना एटा हो ना एटा हो ना एटा हो ना एटा हो तो हम करेक्ट आंसर है सी इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म बट फेल्स टू बिल्ड institutional and human capital strength है next which of the following is the primary benefit of investing in healthcare as described in the passage healthcare रे invest करले which is the primary benefit in investing on the healthcare ठीक है पढ़ दे पांचटा ऑप्शन then we'll look into it एथा देखिबा हेल्थ केयर पर कोड कथा है कि देखिया इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन हेल्थ केयर टर्न अच्छा एडी हेल्थ केयर पर एडी हम कथा है हेल्थ केयर ensures that citizens can contribute productively over the long term reducing absenteeism and lowering the economic burden of disease हेल्थ केयर कौन करि परिबो कि लोक मानकर प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू माने तांका सिटीजन माने कंट्रीब्यूट प्रोडक्टिव माने बहुत समय जाय प्रोडक्टिव हे परिबे प्रोडक्टिविटी तांका रहिबो आउ तांकर एब्सेंटिज्म माने काम को न आसीबा किंबा तांकर कोन डिजीज जो तांको बिच कोन बर्डन सेटा को सी माने कम कर दे परिबो तो एटा गोटे हेल्थ केयर पर बाकी मु हेल्थ केयर हां एठी गोटे पढिथिली किंतु एटा हेल्थ केयर कोन करे सेटा न एठी लिखा छि हेल्थ केयर रे कोन पहिले देखो फ्रेजाइल एजुकेशन ने कोन हो एठी लिखि छि एजुकेशन कोन करिवो एठी लिखि छि हेल्थ केयर कोन करिवो तो दिस इज द वन वी शुड रेफर टू तो देखिए रिड्यूसिंग पॉपुलेशन साइज से ठीक कौन जगह रिड्यूसिंग पॉपुलेशन साइज ऊपर कथार्ता है नहीं तो एटा इमीडिएटली वी कैन क्रॉस इट आउट अच्छा ensuring long term productivity एटा में पढ़ी थी ensuring long term productivity by lowering disease burden एटा भी हमें पढ़ी थी एंड absenteeism विषय भी हमें पढ़ी थी so एटा एंश्योर करछि देखो एटा अछि कि हेल्थ केयर एडी ensures that citizens can contribute productivity हे परिबो long term productivity हे परिबो absenteeism reduce हे परिबो disease रो economic burden भी reduce हे परिबो so आंसर आसीबो 80 पढ़ देले हम सेम वर्ड्स गुड़ा थिला सो बी कैन बी द आंसर तथा चेक कर सी इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस सेठी किछि कॉम्पिटिटिवनेस विषय किछि कथार्ता है नी सो नो रीडायरेक्टिंग पब्लिक फंड देखो पब्लिक फंड को रीडायरेक्टिव विषय किछि हेतला कि पब्लिक फंड विषय किछि कथार्ता है नी तो रीडायरेक्ट विषय कथा हबार ही नहीं achieving better diplomatic ties through global medical collaboration पूरा पैसेज global medical collaboration विषय भी किछि कथार्ता हेनी so the answer should be B अच्छा it प्रियंका सामल correct प्रियंका सामल B good very good अच्छा the third tag होची which of the following is not a factor
contributing to national strength as per the passage. National strength को contribute करबनी, will not strengthen माने national strength को passage हिसाब रे according to the as per the passage national strength को contribute करबनी. ए तीनटा ऑप्शन देखो, ए तीनटा भितरु को ऑप्शन टा कंट्रीब्यूट करबनी. जहा अब जदी खाली एटा कंट्रीब्यूट करबनी एटा आंसर हबो. बी एंड सी जदी कंट्रीब्यूट न करबो ताले एटा आंसर हबो. ओनली सी जदी कंट्रीब्यूट न करबो ताले सी टा माने एटा आंसर हबो. ए एंड सी हेले बी टा जदी माने ए बी टा कंट्रीब्यूट करथो ए और सी टा कंट्रीब्यूट न करथो तो ए एंड बी हबो. तो सही हिसाब रे तो किछि भी कंट्रीब्यूट न करथो ऑल ए बी एंड सी. गिव इट अ रीड. अरे वाह, वेरी गुड प्रियंका सामने. अच्छा आगे क्या बोले. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर is a factor contributing to national strength. National strength बढ़िया पाई कौन को गुड़ा contribute करूनी. If there is education, हमें education and health care ऊपर जो invest करिवा से nation को strength करिबा ना करिबनी करिबा तो मो logic रे हिसाब रे एटा contribute करूची. Strong governance that ensures consistent and transparent policy maker माने गोटे strong government थिबो. गवर्नमेंट जो स्ट्रांग थी वो नेशनल स्ट्रेंथ को ऐड करिवो. ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी मेकिंग जो रहिला ताले नेशन को स्ट्रेंथन करिवो. तो ए और बी बिल्कुल भी हबे नै तमे जोतरे ए और बी अछि से सब गोटे ऑप्शन काटि देले हबो. कारण देखो आंसर निहाती गोटे बाहिबो. आंसर अछि कि ना देखले ए और बी आंसर नुहो ता माने एटा हबोनी एठी हबोनी एठी हबोनी कारण बी अछि हबो एटा हबो एटा हबो एठी एटा हबो कारण एठी ए और बी किछ नाही एठी बी हबो. एठी ए एंड बी अछि एठी ए बी सी तीनटा अछि तो एटा हबोनी आंसर ओनली सी. आमे जानि छी कोन अछि व्हाट विल कंट्रीब्यूट आमे सती की चेक कर दो सी रे कोन लिखा है पढे दरकार नहीं. स्टिल वी हैव द आंसर. देखो तथापि सी पढो. हाई डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एटा किछि भी डिस्कस हेतला throughout the passage. Was there any discussion? No. So answer is C. Let's move to the next one. Acha. Identify the correct statement based on the passage. सेठी कोन कहतला ये दीटा भीतर ए तीनटा भीतर कोटा कंट्रीब्यूट करूनी एठी कहूची करेक्ट स्टेटमेंट या भीतर जोटा लिखा है जेला माने जे पैसेज रे डिस्कस है तले एठा तले सेही ऑप्शन टा हमर करेक्ट हो. माने जदी खाली पैसेज रे ऑप्शन ए टा डिस्कस है बी सी डिस्कस है नहीं तले एटा ए और सी डिस्कस है बी डिस्कस है तले एटा सही हिसाब रे. तो देखि दियो तीनटा को एंगुलर विषय में डिस्कशन करी थिले. इफ यू वांट वी कैन गो बैक. Angola has been attempting to reduce dependency on oil by investing in people. Global uncertainties make social investment in education and health risky and unwise. Healthcare and education play both moral and economic role in a national development. I think आमे जदि एटी फोकस करिबा अंगोला ऊपर जदि फोकस करिबा ready assume Angola Prachi. Angola in recent years has made efforts to invest in education eta discuss hechi and healthcare to reduce its dependency on oil eta discuss hechi tamane a ready tamane eta discuss hechi so eta discuss hechi tamane eta answer hobani gote gote gala emiti bi hoy by enhancing human capital it aims to strengthen productivity and attract investment in sector beyond its primary industries. While challenges remain, such measures show the potential for transforming short-term gain into lasting national strength. Acha.
हाँ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ए विषय आमे थ्रू आउट द पैसेज कोटी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज विषय डिस्कस करिने तो मु जानि एटा डिस्कशन हेनी तामे जो बी अछि सेटा भी कटि जिवो राइट हाँ तो बी अच्छी कट जीव सी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन प्ले बोथ मोरल एंड इकोनॉमिक रोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट 8 ही नो हेडिंग in conclusion economic growth flourishes when it rests on the solid social foundation. Investment in human capital through education and healthcare are not only moral imperatives but strategic economic decision. Eta nihati darkar. So, eta discuss H. A and C. Eta nuha A and C. That's the answer. Answer is la A and C. Nama Priyanka C. A and C, both of them are have been discussed. So answer hoga B. C no. Right. Choose the most appropriate synonym of the word glaring. मु देखो मु कहितली जोठी टिके डार्क लिखाइ दो तारि ऊपर किछि ना किछि गोटे क्वेश्चन थिबो glaring हाँ एटा डार्क करा हेनी a glaring truth in today's global economy is that wealth alone cannot secure sustainable growth. माने खाली wealth sustainable growth को सिक्योर करी परिबनी एटा गोटे निराट सत्य जो कहने निराट सत्य that is called a glaring truth. Okay तो आम क्वेश्चन को आछि क्वेश्चन को छी choose the most appropriate synonym of the word glaring as used in the passage. Obvious, hidden, subtle, dismissible, moderate. अच्छा glaring माने जो निराट सत्य माने जो देखा होची ए सत्यटा को तमे माने तम कहि परबनी ए सत्यटा झुटलेई परिबनी सेटा होची a glaring truth हला तो कोन हिडन तो होई परियोनी लुचि हेबनी एटा नेगेटिव अछि सटल माने लुचि जिवा अगेन हिडन सटल माने बहुत कम तार इफेक्ट ना डिसमिस करियो ना ए ट्रुथ को डिसमिस करियो बनी मॉडरेट होवनी आंसर होची ऑब्वियस निराट सत्य जहा को तमे झुटलेई परियोनी तो होची ऑब्वियस द ऑब्वियस ट्रुथ हैला तो आंसर होची ए वेरी गुड choose the most appropriate synonym of the word stall synonym same name stall आमे एटी पढ़थिले stall टा एटी आमे ये भी slow down now किमा stop सेटा हमको लागिला से डेइते पर देखि हां एटी डिले अछि प्रमोट अछि एनकरेज अछि फाइनलाइज अछि गारंटी अछि हैला तो एटी आमे स्लो डाउन और स्टॉप एडा टिके नेगेटिव टोन रे अछि देखो एठी मात्र गोटी ऑप्शन अछि जोटा टिके नेगेटिव टोन रे अछि बाकी सब पॉजिटिव टोन प्रमोट एनकरेज फाइनलाइज गारंटी आंसर कोन डिले राइट चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन फिलर को फिलर ए फिलर ए कटी कौन हम आमे एटा को फिलअप कला बेलको हम पूरा सेंटेंस टा पढ़िया को पढ़िबो आ एटा हम तो मन थिबो एटा इट इज एन एग्जांपल एंड अंगोला रे भी 3 एग्जांपल हिसाब रे देछि फॉर एग्जांपल some resource dependent nations have taken steps to diversify their economics by dash revenue into school training centers hospitals and public health program diversify माने बांटी दबा their economics by dash माने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करछंदी dash revenue into माने पैसा टाकू into schools training centers and hospitals public health program
तो से भीतर को डाइवर्सिफाई कर भाई आमे गोटे वर्ड भाबिबा कोनटा ही पारे माने सर को डाइवर्सिफाई कर माने एआई भीतर जदी डाइवर्सिफाई कर बांटी देछंती तो आमे मे बी डिस्ट्रीब्यूट गोटे वर्ड आसी पारे एटा हम लिखि दो मे बी दिस इज द वर्ड एई गोटे एटी डिस्ट्रीब्यूट करथे पैसा को या भीतर डिस्ट्रीब्यूट करथे एते सब भीतर कोन हेते पैसा डिस्ट्रीब्यूट करथे सो मे बी आम हिसाब रे गोटे वर्ड आसी डिस्ट्रीब्यूट हेइ थाइ पारे लेट्स सी जदी एई भलिया किछि गोटे वर्ड साइड थिबो देखो डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं होल्डिंग डाइवर्टिंग एग्जॉस्टिंग कंसीलिंग एंड चैनलिंग अच्छा होल्डिंग रो अर्थ कोन होल्डिंग मींस is to stockpile माने इकट्ठा करके रखिया तो ऑब्वियसली सेटा में डिस्ट्रीब्यूट कथा कहू तो एठी होल्डिंग हबनी डाइवर्टिंग रीडायरेक्ट ऑलरेडी व्हाट सेटा यूज होती डाइवर्टिंग बाय डाइवर्टिंग हबनी एग्जॉस्टिंग टू फिनिश concealing is to hide no तो only one जदि पांचटा ऑप्शन चारटा ऑप्शन हेलानी गोटे ऑप्शन नियत हबो तो this should be the one channeling all the four गोटे रहला ये channeling जदि तुम बुझी भी ना पातो तमे जानलो ए चारटा तो पक्का हबे जोटा रहला सेटा आंसर सो अच्छा channeling अर्थ कोन माने माने जंती हम नाळ कर दो जंती हम खेत को पानी देला बेलू जो पानीटा आसे ताको नाळ कर दो एठी टिके जो सेठी जो सेउडा कहंती चैनलिंग हैला सो दिस इज चैनलिंग चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड ग्रिम अच्छा एठी गोटे इंपोर्टेंट कोन रहइबो जते जोटा हम सेठी करथले ग्रिम ता एठी यूज होछि एठी टिके टोन डाइडी नेगेटिव चलची आमे जानि परथले तो अ ग्रीम एग्जांपल इज व्हेन एक्सटर्नल शॉक फोर्स गवर्नमेंट अच्छा फोर्स गवर्नमेंट टू कट बैक एसेंशियल स्पेंडिंग माने ओडे गवर्नमेंट को फोर्स करा जाउची तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी माने रियल है कि भी बहुत खराब जिनस देखिया को मिलची कि गवर्नमेंट को फोर्स करा जाउची है तो एटा नेगेटिव अछि तो डेफिनेटली यार ऑपोजिट टा समवट पॉजिटिव हो देखो ग्रीम हार्श नेगेटिव ब्राइट यही परियो सीरियस नेगेटिव ग्लूमी नेगेटिव ब्लीक नेगेटिव ग्लूमी ब्लीक ऑलमोस्ट सेम माने डाउन तो गोटे पॉजिटिव वर्ड एठी अछि ब्राइट the grim ro antonym habo bright so is it clear maybe you do not know all the words maybe you do not know all jaha bhi achi words guda tame jani no but with the tone bhi tame taku आउ थरे रिकन्फर्म कर परबे हां एटा ही ठीक अच्छा मैं आउ थरे कहूची मु जोडा कहूची इट इज इन एडिशन टू योर एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी तम जो एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी अछि ता संगे रे ए प्रकार अप्रोच भी तुमको कंफर्म कर दो कि तुम ठीक ही आंसर देछो ऑलराइट सो आ गोटे देखि दबा आ गोटे पैसेज फटाफट फटाफट कर दो है ना over the past 2 decades research has emphasized the importance of accessible communication and inclusive programs for people with disabilities acha research has emphasized importance of accessible communication and inclusive programs for people with disabilities acha the world health organization estimates that over 1.3 billion people globally live with some form of disability with communication barrier ranking among the most significant challenges माने कम्युनिकेशन बैरियर होची माने से जहा कहिया को चाहते जहा हम बुझिया को चाहते मे बी हम सेटा बुझी पारु जो मन को डिसेबिलिटी होची फॉर इंडिविजुअल्स हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग
sign language remains a primary communication tool. Studies from the National Institute of Deafness and other communication disorder show that early exposure to sign language enhances cognitive skills, literacy, and social integration. However, barriers such as the shortage of trained interpreters and limited public awareness persists. In 2017, a targeted study involving 20 individuals with hearing impairment, जब सुनिया को तांको difficult dash हैला कि छोड़े कौन है था findings revealed तामने एठी है थिला कोड conduct करा जाइतला वाला एठी जहाँ भी थियो सेटा लेखा तो may have been conducted. Findings revealed that while basic signs were widely understood, comprehension dropped when regional variations or complex grammatical structure were used. Findings were revealed. माने findings क्या होला कि basic signs were widely understood. Widely understood. Comprehension dropped. Comprehension dropped. हैला बेसिक यू बुझियला किंतु कॉम्प्रिहेंशन केतो ड्रॉप है रीजनल वेरिएशन थला कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर रहिला तले सेठी माने बुझियाटा कमे लोक ना बुझि पारो एते भलो करी पॉइंटिंग टू द नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग एंड ब्रॉडर पब्लिक ट्रेनिंग से सेहितु जानला कि माने सेहितु कहजनी कि जेहेतु हमें लोक बुझि पानांती ताले हमें ट्रेनिंग ताको स्टैंडर्डाइज करिया दरकार माने समस्त एका भलिया जिंस ही कहिबे जदी समस्त बुझि परिबे. To address these gaps, several disability focused associations have implemented bold initiatives including large scale sign language training for both disabled and non-disabled individuals. This direct approach fosters mutual understanding and reduces social isolation. Fosters means improves mutual understanding and reduces social isolation. Recent research also highlights the growing role of music-based interventions in disability support. While commonly associated with auditory experience, माने सुनिबा पाई music therapy leverages rhythm, vibration and movement to stimulate multiple senses. हाला music therapy music based जदि intervention music को जदि introduce करा जाउची तले एथरे multiple senses काम कोचे लोक मानन को बुझिया पे सहज होत बोली से माने रिसर्च करछथि. The Journal of Music Therapy reports that tactile vibration ମାନେ जदि हमें कोन जगह माने हार्ड सरफेस ऊपर तमे हाथ रखियो जदि वाइब्रेशन दा होची सेटा जो फील करबो सेटा होची tactile vibration from instruments particularly percussion can be felt and enjoyed by those with hearing impairment. मीन से जो वाइब्रेशन टा को तमे particularly से जो अप डाउन जोटा अछि से जो म्यूजिक ता से वाइब्रेशन टा तमे फील करि परिबो एंड से जो माने को सुनिया टिके असुविधा होछि से माने सेटा को easily capture करि परछन. For individuals with mobility or cognitive challenges, structured music activities improve coordination, memory and emotional well-being. जो माने को बुझिबारे कष्ट होछि किमा से माने चला बुला करे टिके कष्ट होछि तले सेमान को जदि म्यूजिक एक्टिविटी और स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक एक्टिविटी और भलो बडे प्लान करे म्यूजिक एक्टिविटी करा होची ताहले तांकर इंप्रूवमेंट कोथि रहउची मेमोरी इमोशनल वेलबीइंग आ कोऑर्डिनेशन रे तांकर इंप्रूवमेंट होची. म्यूजिक थेरेपी एक्सटेंड्स बियॉन्ड पैसिव लिसनिंग. इंटरैक्टिव मेथड्स सच एज drumming circles, rhyme exercises and movement to music sessions encourage active engagement. Neurological studies indicate these activities promote neuroplasticity. Neuroplasticity में अर्थ होची
गोटे नुआ इनफॉरमेशन टाकू जदि तुमको दिया हो तुम सेटा को रिटेन केते समय पई करि पछ तो होची न्यूरोप्लास्टिसिटी strengthening brain connections and aiding rehabilitation of those adapting to long term disability तो जो माने डिसेबल हो जाय बहुत समय से डिसेबल रहिबे तो से माननकु केमे रिहैबिलिटेट माने सोसाइटी संगे आउट इंटीग्रेट करिया केमती इजीली से सोसाइटी संगे मिल से रहि परबे सेटा को से सहज करे strengthen करछि many associations have joined international collaborations to share expertise on combining communication tools with creative therapies communication combining kon करछंदी communication tool with therapies global reports confirm that integrating sign language accessibility with music based program leads to measurable improvement in social participation self confidence and mental health है so global reports confirm करछंदी कि इंटीग्रेट कले साइन लैंग्वेज को तो accessibility with music based program को कहूची improvement in social participation self confidence and mental health इधर improvement होची in conclusion माने finally evidence strongly support combining accessible communication with sensory inclusive activities like music therapy by merging research backed strategies with community engagement organization can create inclusive environments that empower individuals with disability to participate fully and thrive अच्छा मु एटा पूरा पढ़ी देली एंड मु तुमको बुझेलिनी कि एटा कोन कारण एठी मु आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि केमिति पैसेज तक बुझिया मु कोन कह देली आई एम टेलिंग यू समथिंग which is in addition to your existing strategy तुमको आंसर टा केमिति फाइंड करे इजी हो तो हमें पैसेज को केमिति बुझिया ता पे विल डू अ क्लास बट एबे तमर एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजी संगे करेक्ट आंसर को केमिति फाइंड आउट करिया सेथरा में फोकस करछ सो प्लीज डोंट माने फील करनी कि बुझा होनी किछि करा होनी जस्ट अंडरस्टैंड आज रा पर्पस अलगा तो आज हमें फोकस जेहेतु हमर होची गेटिंग करेक्ट आंसर मु एई पार्ट रे टिके माने साइड कर देछि बुझियाटा अच्छा तो एटा कोडा ना राइट according to the passage what is a key finding from 2017 study involving individuals with hearing impairment 2017 ओटा स्टडी हेतला right in 2000 study a targeted study involving 20 individuals with hearing impairment dash findings revealed that with basic signs where widely understood comprehensions dropped when regional variation and complex grammatical structure are used pointing to the need of standardized learning and broader public training need जाए एटा हम दरकार नहीं कौन दरकार सेटा नहीं कौन से फाइंडिंग करले फाइंडिंग होची एतिकी एटा होची फाइंडिंग पॉइंटिंग टू द नीड कौन नीड सेटा फाइंडिंग हो कौन फाइंड कले कि बेसिक साइंस में बुझी होतला कि जेतेबेले रीजनल वेरिएशन किछि आस्तला कि कॉम्प्लेक्स ग्रामर विषय किछि होतले तो लोगों को बुझिया रे कष्ट होतला सो सेही फाइंडिंग ऊपर हमर आछि दीस आर द ऑप्शंस so which one do you think is the right answer most participants were unfamiliar familiar नथिले चलिबो कारण से गेले most माने बुझी पार नथिले unfamiliar with any form of signal sign language कौन से भी फॉर्म ऑफ साइन लैंग्वेज से जान नथिले सेठी सेटा डिस्कशन हे नथिला रीजनल एंड ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स साइंस पोज्ड चैलेंज इन कॉम्प्रिहेंशन हां एटा थिला रीजनल एंड ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स साइंस एटा थिला so this can be the answer participants showed greater preference for music therapy विषय कथा है जंदी किंतु से पार्ट रे नुह म्यूजिक थेरेपी पई ता पर डिस्कशन हेछि देखो एटा होची हमर फाइंडिंग
एठी भी म्यूजिक थेरेपी ऊपर किसी डिस्कशन है नहीं म्यूजिक थेरेपी नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कशन है जी सो दिस इज डिफरेंट एठी दिस इज माने एठी कौन म्यूजिक थेरेपी ऊपर डिस्कशन है नहीं सो कंफ्यूजन हवनी सो हियर एठी म्यूजिक थेरेपी ऊपर डिस्कशन है नहीं सो दिस विल नॉट बी द आंसर अर्बन पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टूड साइंस बेटर देन रूरल पार्टिसिपेंट माने सहर लोक भलकरी बुझिले रूरल लोक माने गाँ लोक भलकरी बुझिले नहीं ए भलिया कोन डिस्कशन है नहीं साइन लैंग्वेज वाज एंटायरली मिसअंडरस्टूड एंटायरली माने कंप्लीटली कहीं भी बुझी पाले नहीं भूल बुझिले ए भलिया कोन जिंस से करी से कोन कहि कि रीजनल इंट्रोड्यूस हला बळको कि कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल साइंस इंट्रोड्यूस हला बळको टिकिए बुझीबारे कष्ट हेतला सो दिस इज द आंसर बी इज द आंसर रेस्ट ऑफ देम आर नॉट द आंसर चेक करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन यस प्रियंका सामल करेक्ट अच्छा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज म्यूजिक थेरेपी बेनिफिट्स ओनली दोज विथ हियरिंग इंपेयरमेंट जो माने सुनी पारु नांदी खाली सही मानकू म्यूजिक थेरेपी हेल्प करूची भारे देखो हाँ the journal of music therapy reports that music therapy reports that tactile vibration from instrument particularly precision can be felt and enjoyed by those with hearing impairments for individuals with mobility and cognitive challenge structure musical activities improve code एवडा भी improve होचंती खाली जो माने के hearing impairment अछि से माने enjoy करूचंती आ individuals with mobility जे चला बुला रे कि मैं बुझियर जान कष्ट होची से मानकर भी benefit होची improves coordination memory and emotional well-being एगुडा भी होची ता माने ओनली दोज हेले एटा भूल हम तो एटा हमर डिस्कशन है नी तो दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ता माने जोटी वन अछि सेटा काटि दवा हमरो ए आउ सी रहला स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक बेस्ड एक्टिविटी एड मेमोरी एंड इमोशनल वेलबीइंग जस्ट ए पढिली so this is the correct one तो a आउ c जोड़ा जाको हबो communication barriers are among the most significant challenges for people with disability एटा फर्स्ट ईयर थिला communication barriers ranking among the most significant challenges communication barrier सबुटु significant रहुची so this is also discussed ता माने एटा हबनी हम 2 and 3 अछि this should be the answer देखिए ओके करना दी सॉरी हाँ नेक्स्ट what do neurological study reveal about interactive music based therapy neurological study recent music therapy drumming neurological studies indicate these activities promote neuroplasticity strengthening brain connection and aiding rehabilitation of those adapting to the long term stability these activities co-activity extend beyond passive listening co-activity drumming circles rhyme exercise and movement to music sessions encourage active engagement अच्छा movement to music एटा rhyme exercise drum circles drumming circles एगुडा कौन करती promote को जमले these activities promote neuroplasticity strengthen brain माने brain information retain करेरो capacity को बढ़ाउछन्ती so let's see so it helps build social bond among caregivers and families only
गोटे पर्टिकुलर लोक माने गोटे पर्टिकुलर टाइप पर तो नहीं एटी जहाँ भी डिस्कशन है समस्त को ऑल पीपल विथ डिसेबिलिटी है आ एटी पण केयर गिवर्स जे केयर करचंती आ फैमिली विषय कथार्थ है एटी कौन से विषय किछ नहीं तो ओनली फर्स्ट तो सेटा ही भूल सेटा हबा कथा नुह it decreases attention span and discourages repetitive learning pattern कौन सी जिनसे डिक्रीज करूनी so this is not it strengthens brain connections and aids rehabilitation of long term disability एटा पढ़िला भलिया लागुची let this could be the answer it causes overstimulation in individuals with sensitive माने मन अति अधिक ताको स्टिमुलेट कर दो अति अधिक एक्साइट कर दो अति विषय किछ नथिला सो नो ओवर स्टिमुलेशन तो एटा भी हबनी it encourages passive reflection and slower recovery तो माने recovery process slow कि हाई सेटा भी किछ जणा नहीं so this is also not the answer is C over here हैला बुझलो अच्छा which of the following is not a challenge mentioned in the passage regarding sign language adoption challenge माने difficulty which is not a difficulty mentioned in the passage regarding sign language adoption sign language को adopt करे रे को या भी तो जिनसोटा is not a difficulty अच्छा लगा जी ओवर यूज ऑफ साइन लैंग्वेजेस इन नॉन डिसेबल्ड पॉपुलेशन माने साइन लैंग्वेज टाकू जो माने डिसेबल्ड नहंती तांको संगे बहुत अधिक यूज करिबा इनकंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल साइन वेरिएशन माने साइन लैंग्वेज वेरिएशन हेले जंती डिफिकल्टी होता बुझिया पई सेटा इनकंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग में ठीक रे बुझियो नथला एटा ए चैलेंज ता मेंशन अछि कि जेतले साइन माने रीजनल लैंग्वेज आसिला रीजनल वेरिएशन आसिला लोकन बुझिया कष्ट हला एटा मेंशनड अछि सो दिस इज एटा आंसर होबनी कारण से कुछ नॉट अ चैलेंज माने जोटा चैलेंज नुह एटा कोन से बका चैलेंज भले भी लागुनी माने अति अधिक जदी जो माने लैंग्वेज डिसेबल नहंती तांको संगे यदि ओवर यूज करछन लैंग्वेज ता तो मे बी हम सीखि जिवे कि जे चैलेंज भले किछ लागुनी तो मे बी दिस इज द आंसर मे बी देखिए लैक ऑफ ट्रेन्ड इंटरप्रेटर्स एंड कम्युनिटीज एटा भी मेंशन करा हेची कि कम्युनिटी रे बहुत कम लोग अछन जे कि ट्रेन्ड अछन लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस हां पब्लिक अवेयरनेस रे भी लिमिटेशन अछि एटा भी साइन कराइछि तो एटा भी मेंशन अछि difficulty understanding complex grammar in science सही पार्ट रे जोडी inconsistency of understanding दिला सही पार्ट रे difficult complex grammatical science एटा भी मेंशन खाली ए गोटी का मेंशन नहीं so this is the answer हैला now choose the most appropriate synonym of the word bold अच्छा bold रो synonym टा हमको चूज करया अछि bold माने कोन जे ओपन जे टिके साहसी जे बेसी डरेनी जे 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 माने रिस्क नहीं पारिबो से होछि bold cautious से बड़ा किछ नो जे माने देखि चाहि करबो से सेमति नो timid डरियला सिलेक्टिव ये तो बिल्कुल भी नो हाईलाइट ये किसी रेलेवेंट है देखो नहीं हाईलाइट अच्छा बोल्ड को हाईलाइट कहीं कर देंदी हमें रोटे न था कि हमें लिखला बोल्ड करते माने हमें हाईलाइट करू इंपोर्टेंस हो मे भी सेति भाई कि हम कॉन्टेक्स्ट बोल्ड को अछि फियरलेस जोटा कि एटा माने ओपन माने माने रिस्क देबा को ताको डर लागेनी तक जाहु डर लागेनी से होचे फियरलेस तो हम कॉन्टेक्स्ट से एटा हो आंसर हाईलाइट खाली लिखा रे यूज वे so don't when it confuse hobani okay choose the most appropriate synonym of the word direct to synonym acha right direct माने मु तुम से डायरेक्ट कथा होची तुम माने डायरेक्ट
कट टू कट कथा होची डायरेक्ट कथा होची जहा जहा अछि जेमति अछि से मु तुमको शेयर कहूची माने कोन टेलिंग यू द ट्रूथ किछि एपट सपोर्ट कर टेलिंग यू द फैक्ट्स लाइक दैट तो राइट हेई पारे मे बी हेई पारे इनडायरेक्ट तो हबनी सिनोनिम पचराई छी कंफ्यूज तो हबनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हेई पारे सटल माने टिके लुचे की एटा भी हेई पारे तो राइट आउ स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा मते को मु तुम संगे डायरेक्ट कथा होची ता माने कोन मु ठीक कथा कहूची माने कि तुम माने जहा अछि जेमति सेमति कहूची डायरेक्ट कथा हबार अर्थ होची स्ट्रेट फॉरवर्ड जहा अछि जेमति जे कहबी सो दिस शुड बी द आंसर जदियो इन सम कॉन्टेक्स्ट राइट ता बी ठीक हुए he was direct माने he was right बेले भी बेले कहि दियंती एटा कॉमन माने कॉमन कंफ्यूजन डायरेक्ट रो सब बेले आंसर हबो स्ट्रेट फॉरवर्ड जहा अछि जेमति अछि से कहला चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड joined joined माने कनेक्ट हबा एंटोनिम को डिसजॉइंट माने माने अलगा हे जबा अच्छा यूनाइटेड माने जॉइन हबो ना participated या तो यार किसी रेलेवेंसी नहीं engaged again join होगा separated correct answer combined join होगा तो आंसर है ला separated alright fill in the blank with the most appropriate option से जो एट जो blank ता अच्छी एटा ए blank टिके एटाकू हाँ ए ब्लैंक टाकू से कहूची मैं हाँ एठू ए जाए ताठू टिके आगुरु जो हम पढ़ी जा हमें टोन टा भी बुझी परिबा आ एठी कोन आसपारे सेटा पे हम बुझी परिबा तो एठी लिखा होची वेट पड़दा फॉर इंडिविजुअल्स हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग who are deaf or hard of hearing, sign language remains a primary communication tool. Studies from National Institute on Deafness and Other Communication Disorder show that early exposure to sign language enhances cognitive skills, literacy, and social integration. However, barriers such as shortage of trained interpreters and limited public awareness persist. In 2017, a targeted study involved 20 individuals with hearing impairment were conducted. हबो माने एवला हेइतला conducted हमें करिथिलु हैला एवला किछोटा हेइतो conducted हेइतो ता जरु किछोटा फाइंडिंग आस्तियो तो हमर कॉन्टेक्स्ट जे जहा बरो से तार किछोटा हो कि गोटे एक्सपेरिमेंट माने किमा गोटे स्टडी हेइतला was conducted हाँ अच्छा तो fill in the blanks with the most appropriate option अच्छा analyze the impact of music therapy एठी music therapy I don't think so कारण music therapy एठी आछि म्यूजिक थेरेपी एठी कोन जगह म्यूजिक थेरेपी नहीं तो ए कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल तो म्यूजिक थेरेपी हबनी इन्वेस्टिगेटेड द चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग साइन हैला कंडक्ट हितला गोटे कंडक्ट हितला तो कंडक्ट कोन सुनिसोटा यदि कंडक्ट हितला सेटा इन्वेस्टिगेट हेई पारे मतलब हमें खोजुतिबे कंडक्ट करते इन्वेस्टिगेशन मे बी surveyed survey करा हितला surveyed how often participants used facial expression instead of hand signs आमे खाली hand signs ऊपर ही कथा होतले facial expressions ऊपर कथा ही नहीं से context रे so एटा हबनी surveyed may be correct assessed हे पारे assess भी हे पारे the role of interpreters सेठी interpreters रो रोल ऊपर नथला गोटे जिनसे ता पूर्व जला कि इंटरप्रेटर्स माने ठीक रे ट्रेन हे नांती
इन अर्बन हेल्थ केयर कम्युनिकेशन हर एक हाँ एडी अर्बन हेल्थ केयर ऊपर भी किसी डिस्कशन है नहीं examined vocabulary retention vocabulary retention in bilingual hearing impairment classroom is तो कौन कथा ही है नहीं so not this the only answer is this investigate करा है था means were conducted but investigation है कि कौन कौन the challenges in understanding sign language को बुझिया को कौन कौन difficult होची से यहाँ पर investigate है था माने कोड़ा स्टडी करा है देखो कारण just there से कौन होची however barriers such as shortage of trained interpreters and limited public awareness persist ए भलिया प्रॉब्लम रहुची आ तारी पर गोटे स्टडी करा है थिबो identify the statement that are true based on the passage माने एक रु अधिक ट्रू अच्छी एक रु अधिक ट्रू स्टेटमेंट अच्छी भाई मु तो बिना पढ़ी के आर ट्रू देखिला पर मु जनरली काटी देबी एटा मु जानची माने एक्सपीरियंस रो यदि आर ट्रू से ऑलरेडी पढ़ी देछि गोटे हिंट दे देछि तबे सिंगल तो केबे ठीक होबनी बली मत लागुची बट स्टिल आउ थरे अच्छा music therapy is limited to auditory stimulation and is not suitable for individual with hearing eta bhul and is not suitable for individual with hearing impairment it is suitable for them tanka pai to suitable thila it is not suitable to habani right to eta bhul दादा भाई एबे भी मोर डर मानलानी अच्छा तथापि एटा भूल the 2017 study found that sign comprehension declined when regional differences and complex grammar were involved एटा अच्छी भाई गोटे तो हे गला 2 अच्छा तले एटा जिवला तो आइदर एटा हो नले एटा हो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी एटा आंसर हो हिजवा कथा बट स्टिल sign language training is being conducted for both disabled and non-disabled individual to promote inclusion हाँ एटा discussion है thank god एटा ही answer right एटा ही answer कहीं जोड़ा या कहीं discuss है तो एटा ही answer so this is one good approach that you can do ठीक है grammar रो भी hint नहीं जाई पारो अच्छा identify the statement or statements that is or are false based on the passage सेठी ठीक कोटा थिला कहउतला एठी भूल कोटा छी सीए कहउची इज गोटे भी पर तो आर भी पर तो एठी आ किछि करि होबनी the passage states that music therapy is mostly a passive listening activity aimed at calming emotional distress इमोशनली यदि कार यदि मन खराब अछि ताकू काम डाउन करिया पई म्यूजिक थेरेपी ऊपर म्यूजिक थेरेपी दिया होछि एटा डिस्कस कराइनी ता माने एटा गोटे फॉल्स अछि 1 ता माने एटा आंसर हे परिबो एटा आंसर हे परिबो एटा हबनी एटा हबनी एटा हे परिबो according to the WHO over 1 billion people globally are affected by communication disorder ठीक के देखेगा over 1.3 people globally live with some form of disability with communication barrier ranking among the finger ता माने एटा ठीक अछि एटा affected by communication disorder okay one challenge in sign language adoption is the difficulty in understanding identify the statement that either false acha one challenge in sign language adoption is the difficulty in understanding regional and grammatical eta thik ache this is correct तो एटा भी नहीं
According to the WHO, over 1 billion people globally are affected by communication disorder. It is affected by communication disorder. No, affected. Globally live with some form of disability. Communication barrier, communication disorder, no, disability. So this is false. This is false. So this is the answer. Okay, that's it. Acha. Reading comprehension, if you want to do it right, तम निज स्ट्रेटजी संगे आज जंती मु कली टिके अनकन्वेंशनल टिके थिला बट जहां भी थिला दिस कैन हेल्प यू जस्ट किंतु रीडिंग कंप्रेशन कला परे मेक श्योर दैट तमे बुझिया पाई ही पढ़ो यू रीड टू अंडरस्टैंड डोंट गेस आमे खोजी की आंसर बाहर करू गेस करी किनो खोजी की आंसर बाहर करू ऑब्वियसली प्रैक्टिस डेली. This is my advice for you. Most important. Don't guess. Guess करके आंसर बाहर करी बेनु. मु जहाँ कहती it is like an open book. आंसर अच्छी तमे बाहर करिवो. आंसर अच्छी तमे बाहर करिवो. Do not guess. Find always. ठीक हो जी? तो तमे रीडिंग हैबिट टिके बढ़ाओ. अलगा अलगा मटेरियल पढ़ो. तमे रीडिंग हैबिट बढ़ले तुमको ए पॉइंट बेसिक क्लियर हो. तो आज पे बस एतिकी. नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ गोटे सेक्शन कवर करिबा. थैंक यू.